Assalamu alaikum students. Today we will discuss what is phonotactics. Phonotactics are the rules. Basically, these are the rules that govern the combination and ordering of phonemes in a word or syllable. मतलब एक syllable बना होता है या एक word जो बनता है उसमें different जो phonemes हैं वो किन rules के तहत आपस में मिलती हैं, इस उन rules को हम कहते हैं phonotactics. So basically these are the rules जिनकी बेसिस पर वर्ड्स या syllables मिलते हैं by the combinations of different phonemes. Dealing with syllable, there are some basic internal segmental structures. So we have already discussed the syllable, the internal structure of the syllable. That a syllable consists of onset and rhyme, and the rhyme consists of nucleus and coda. So these are different definitions of nucleus. Nucleus is obligatory, usually middle vowel. देखिए nucleus लाजमी होता है, onset और coda हो या ना हो, both onset and coda are optional. The nucleus is compulsory. Like if there is one phoneme in a word, that phoneme will be a nucleus, and that phoneme will be vowel. Let's say we can take the example of I. I, E Y E I. I is a word, and it contains one phoneme that is a diphthong. I एक diphthong, एक ही sound है इसमें. तो वो एक अगर है और ये एक syllable है, एक word है, तो वो एक sound क्या होगा? वो nucleus होगा, वो vowel होगा. Then onset is optional consonant sound occurring before the nucleus, and coda is the optional consonant sound after the nucleus. So both are optional. Then the next is what is minimal pairs and sets. मिनिमल पेयर्स आर द पेयर ऑफ वर्ड्स. ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके साउंड्स आपस में मिलती हैं. दैट डिफर बाय सिंगल फोनीम. इन पे डिफरेंस जो है वो एक फोनीम का होता है. जैसे बैट, बेड. द डिफरेंस इज ऑफ वन फोनीम दैट इज ट एंड ड. लुक, बुक, पिन, पेन. So these are called minimal pairs. Then what is minimal set? Minimal set is a group of different words. एक ग्रुप सीरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं और एक सिंगल फोनीम से वो डिफरेंट होते हैं. इस ग्रुप को हम कहते हैं मिनिमल सेट. Minimal set is a group of words that can be differentiated by changing one phoneme like feet, fit, fat, fate, foot. So this is a group, and there is the difference of one phoneme. So that is all about minimal set, minimal pairs and sets, structure of syllable, and phonotactics. I think you students have learned.